हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरियल रिएक्शन में। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं लोका के प्री क्लाइमैक्स सीन पर। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते और शुरू करते हैं आज के वीडियो का रिएक्शन। शॉक में गए। एग्जैक्टली। अब उनको भी पता चल गया ना, चंद्रा है कौन। വേദന ഇപ്പോൾ കുറയും. മോർഫിൻ ഷോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് പാവം. നെഗറ്റീവ് കുറെ പോയല്ലേ, കുറച്ചെടുത്ത് വെക്കായിരുന്നില്ലേ? ഐ എം സോറി സണ്ണി, എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോയേ പറ്റൂ. അയ്യോ, അപ്പം ഞങ്ങളോ? സണ്ണി മീഡിയയുടെ അടുത്ത് പോകണം. എന്നിട്ട് നടന്നതെല്ലാം അവരോട് പറയണം. ഞാനാണ് അവരെ കൊന്നത്. उनकी न्यूज चल रही है ना अभी टीवी पे। എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഞാൻ സണ്ണിയെ യൂസ് ചെയ്തു. എനിക്കെന്താ കുത്തി വെച്ച? മോർഫിൻ. ഐറ്റം കൊള്ളാം. എന്താ? ഈ സൺലൈറ്റ് അല്ലാതെ വേറെന്തെങ്കിലും വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഹാർട്ടാണ് വീക്ക്നെസ്. ഹാർട്ട് നിന്നാ മരിക്കും. ചന്ദ്ര എന്നെ കടിച്ചാ എനിക്ക് ചന്ദ്രയെ പോലെ ആവാൻ പറ്റുമോ? കടിച്ച എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വൈറസ് സണ്ണിയുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആവും. വളരെ അപൂർവമേ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഈ വൈറസിന് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ക്ലീൻ ഹെൽത്തി ബോഡി ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്നെ പോലെയാവും. एग्जैक्टली, यही इस ऑफिसर के साथ हो रहा है। സണ്ണിയുടെ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ, മൊത്തം കള്ളും പോകുകയല്ലേ. उनका दांत कितना बड़ा हो गया ना। वो टूट भी गया. एग्जैक्टली। ഒരാഴ്ചക്കകം റേബീസ് പോലൊരു അസുഖം വരും, മരിക്കും. भाई साहब, അതും പെയിൻഫുൾ ഡെത്ത് ആയിരിക്കും. बिल्कुल। उनको जो धीमी आवाज भी इतनी जोर से सुनाई देती है, मतलब उनमें वो सिम्टम्स ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। ಜಗದೀಶ್ ಸರ್, ಹುಡುಗರು ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಸ್ ಆಗಿರುವ ಜಾಗ ಬಂದಿದೆ. ಒಳಗಡೆ ಯಾರೋ ಇದಂಗಿದೆ, ನೋಡ್ಲಾ? ಹಾ, ನೋಡು. ನಾನು ಸಾರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ. അപ്പൊ ഈ സീലിൽ കാണുന്ന പോലെ വെള്ളയും വെള്ളയും ഒന്നും അല്ലല്ലേ? ओ, ನೀ ನೋಕಿ ಅಲ್ವಾ? ಅವನಿಗೆ ಕೊಳ ಹಾಕಿ. ಸರಿ. ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬಂದು. क्या वो किसी स्पेशल टाइप की गोली थी जिससे वो मर ಹಲೋ, गई? ಮಾತಾಡು ಸರ್. ಹಲೋ, ತುಂಬಾ ಕಿಶೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ? ये तो वही थे ना जो हमें एक बार सीन में दिखाई दिखाई दिए थे। ये टोबिनो है. I know. एग्जैक्टली। मैं गलत नहीं थी. तो ये भी एक सुपर हीरो कैरेक्टर है भाई साहब।
ये थोड़ा जादू दिखाया है इनका पावर, है ना? वैसे ही लग रहा है, या फिर हो सकता है उतने स्पीड से भाग रहे हो। हाँ। ഹലോ यही है, यही है। ഓക്കെ എവിടെ പോന്നു? അയ്യോ കളിക്കല്ലേ, തോക്കാണ്, പൊട്ടും. ओ भाई साहब, പേടിച്ച ओ, ये टाइप का मैजिशियन दिखाया है। एग्जैक्टली। Oh no. लेकिन कर कैसे मारे? उसने कहा था ना वो अकेली नहीं है, इसके जैसे बहुत लोग हैं। लेकिन इनकी तो पावर, हर किसी की अलग अलग पावर होगी। एग्जैक्टली, इनकी पावर शायद इल्यूजन टाइप क्रिएट करने हाँ। टाइप हुई। और देखो वैसे लग रहा है। ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಮುಂದೆನೆ ಇದೀನಿ. ನನ್ ಸುತ್ತ ನಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರು? ಏ, ಒಬ್ಬ ಜಾದುಕರ. ನೀನ್ हाँ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ഞാനാ. ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. भाई साहब, इनको वो भी दिख शॉक रहा में है। कि ये कौन आ गया भाई साहब। वाह। वो अभी अभी भी एलियो? मैजिक में ही है। ಆಚೆ ಬರೋ ನನ್ ಮಗನೇ. ഇല്ലുദീനി മക. आओ। Hasta la vista, പോലീസുകാരൻ. बबल्स। ओ, ओ। എങ്ങനെയുണ്ട്? ഏ? भाई साहब, ओ सही है। എടാ പൊട്ടാ, അത് വലിച്ചു ഊരല്ലേ? നിന്റെ ഫെമറൽ ആർട്ടറി കട്ടായിട്ടുണ്ട്, ബ്ലഡ് ലോസ് ഉണ്ടാവും, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരും, ചത്തുവോടാ നീ. ആ മലയാളം കൊത്തും. ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോ. भाई Weak साहब। opponents. वीक ओपोनेंट। लेकिन चंद्रा के साथ क्या हुआ? वो देखो टेस्ट कर रही थी क्या हो रहा है। आओ। ये हॉस्पिटल शायद उन्हीं का होगा। हो सकता है। हाँ आई थिंक। നീലി नीली। भाई साहब, वो उसे पकड़ ले। ഹായ്, ഐ മിസ്ഡ് യു. एक और लव स्टोरी तो नहीं है? इनकी बहुत जल रही है बट അതാരാ പുറത്ത് വേറൊരുത്തൻ? ओ ये आ गया। ये पहले से आ गए यहाँ पे। ಹೇಳ್ರಿ. ಮೇಡಮ್, ನಾಚಿಯಪ್ಪ ಸರ್ ಹುಚ್ಚುಂತರ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಇವಾಗ ನೀವು? ಲೊಕೇಶನ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಸರಿ, ಲೊಕೇಶನ್ ಕಳಿಸಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. सनी उन्हें सुनाई दे रहा है। एग्जैक्टली, लगता है उनकी बहुत पावर छोटी सी अभी एक्टिवेट हो चुकी है। हाँ, बहुत धीमी आवाज भी उन्हें सुनाई दे रही।
എന്താ അയാൾ എന്നെ പോലെ ആവാണ്. एग्जैक्टली उसने भी सेंस कर लिया है कि ये बिल्कुल उनके जैसा ही हो रहा है करके। ओ ये कौन मरा? हेल्प नहीं करेंगे? अभी तक उन्होंने ब्लड को टेस्ट नहीं किया था ना? आओ। भाई साहब बिल्कुल चंद्रा की तरह ही दिखा है ആ ഡോറ് इसमें। കടച്ചേക്ക്. ജോണി ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എന്താണ് ഇവിടെ? എന്റെ പൊന്നു മോനെ, എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. പ്രകാശ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ओ हाँ, ये ചന്ദ്ര, എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്? ഏതാ ഈ കത്തിവേഷം? Dude. I'm a god, dude. ആച്ചിയപ്പ അയാൾ ഇൻഫെക്റ്റഡാ. അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പോയിക്കോളാം. അതൊറ്റയ്ക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ നിനക്ക് പറ്റില്ല. അയാൾ ഫ്രഷ് കൺവേർട്ട് ആണ്. He will be too powerful. നിന്റെ കയ്യിൽ നിൽക്കില്ല. मार दिया? दोनों को भी। ಯಾರು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು? वो दोनों जिंदा थे वही तो। ടെററിസത്തിന്റെ പേരിൽ हाँ। നിനക്കെതിരെ ലുക്കൗട്ട് നോട്ടീസ് शायद उन्होंने खून നീ देखा എക്സ്പോസ്ഡ് इसलिए। ആയാൽ അത് വലിയ പ്രശ്നമാവും. പിന്നെ നാച്ചേപ്പയുടെ കാര്യം അത് വയ്യ മൂത്തോൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളും. പുതിയ പാസ്പോർട്ടും ടിക്കറ്റുമായിട്ട് കുമാർ അങ്ങോട്ടെത്തും. എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോകണം. നിൽക്കും തോറും റിസ്ക് കൂടും. ശരി. ആ പയ്യൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. കുഴപ്പമില്ല. തൽക്കാലം ബേസ്മെന്റിലേക്ക് പോ. കുമാർ വന്നിട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ മതി. പിന്നെ നീലി സൺലൈറ്റ് सनलाइट थी Guys. इसलिए वो मुंह छुपा के जा रही थी। ഞാൻ താഴെ കാണാം. डिटेलिंग्स मतलब थोड़ी भी नहीं सह सकती ना। ऐसा वो लगता है बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है അതാരാ? जो कि जहाँ पे सारे सुपर हीरो लोग रहते हैं। ഇവന്റെ ഫാമിലി കുറെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. जब वो बच्ची थी, अकेली थी, तब इन्हीं लोगों ने उन्हें साथ दिया शायद होगा। हाँ यही हो सकता है। शायद वो जो फादर टाइप इंसान आया था वहाँ, एग्जैक्टली इसकी हाँ। बात कर रहा हूँ मैं। इसने ही वो शायद ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। उन्होंने कहा था ना, अकेली तुम नहीं हो। एग्जैक्टली ചോര തലാറും. അയ്യോ. ഇവിടെ എന്തോ लगता സംഭവിച്ചു है यहाँ पे കേട്ടോ. और भी लोग हैं ना। വേഗം वहाँ पे भी खून और बैंडेज। സോറി ഒളിഞ്ഞു നോക്കുവാണോടാ? ഏതാണ് ഈ ജിജ്ഞാസുവായ കുമാരൻ? ചെല് പൊടാ അകത്തൊരു കാറ്റാണ്. एक तो वो सारी चीजें उनके लिए इतनी नई है, अजीब है। ഈ നാച്ചപ്പയ്ക്ക് സൺലൈറ്റ് പ്രശ്നമില്ലേ? അയാൾ ഫ്രഷ് കൺവേർട്ടാണ്. കൺവേർട്ടായ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ അത് വലിയ പ്രശ്നമില്ല. ओ हाँ। പ്രായം കൂടുന്തോറുമാണ് സൺലൈറ്റ് ഒട്ടും പറ്റാതാവുന്നത്. ഓ, ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? അയാള് ഭയങ്കര റോങ് ആണ്. അയാള് തന്നെ പോലെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമല്ലേ? ഇതിരിക്കട്ടെ. ये कैरेक्टर बहुत यूनिक Funny और ഇൻ കേസ് ഓഫ് थोड़ा എമർജൻസി. हट- അപ്പുറത്ത് ചാർലി ഉണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് പോവാ. ഹേയ്, ഞാൻ പോട്ടെ. मुझे ഒരു तो लग रहा है baby इनकी sitting लव ജോലി स्टोरी ഏറ്റെടുത്തായിരുന്നു. थी शायद। നിർബന്ധിക്കുവാണെങ്കിൽ One side now? വേണ്ട. ഓക്കെ. അപ്പോ രാത്രി യാത്രയില്ല. ചത്തില്ലേ വീണ്ടും കാണാം. उनको अब अच्छा लगा। ബോയ്സ്, ഓ ഇത് വെച്ചോ.
ആവശ്യം വരും. ഉം. ഉം? ഉം. പിന്നെ ഇവളുടെ അടുത്തുനിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിട്ടോ. സേഫ് അല്ല. ആണല്ലേ എനിക്ക് തോന്നി. പ്രത്യേകിച്ച് നീ. उनको समझ में आ गया है. ഉം. ओह गायब हो गए वो वहां से। അറിയാ നമ്മളിന്ന് ചാവോടെ. ചുമ്മാ ഇടപ്പുല്ലേ. भाई साहब. என்னாச்சு? இங்க வந்து உட்காரு. உன்கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும். என் கண்ணை பாரு, வித்தியாசமா இல்ல? உனக்கு கேட்டுச்சா? உனக்கு கேட்காத சத்தம்லாம் எனக்கு கேட்குது. இன்னைக்கு அந்த டப்பா என்னை கொல்ல வந்தா 3 குண்டு என் மேலே तो பட்டுது. ये बहुत पावरफुल. ओह भाई साहब. ஆனா என் உடம்புல ஒரு சின்ன கீல் கூட. ம்ஹும். நான் சொல்றது உனக்கு புரியுதா இல்லையா? உனக்கு எப்படி சொல்லி புரிய வைக்கிறது? ஒன்று மட்டும் தெரியுது, என்னை யாராலையும் கொல்ல முடியாது. अभी वो उस Power. पावर. நான் हाँ யாருக்கும் பயப்பட தேவையில்லை. पावर का मिसयूज होने वाला है. ஆனா எல்லாரும் என்ன பார்த்து பயப்படணும். யோசிச்சு பாரு, அப்பா என்ன சொல்லுவார்? பயம்தான் மரியாதைக்கு ஆணி வேறு. அந்த மரியாதை தான் பக்தியா மாறும். और उनके साथ जो उनके सीनियर ऑफिसर करती இப்போ है, நான் கடவுள் तो மாதிரி. शायद वो चीज उनके दिमाग में है कहीं ना कहीं. இனிமே எனக்கு அழிவே கிடையாது. ओह नो, उसको उन्होंने भी उन्हें मार मार दिया. நான் கடவுள்னா நீ கடவுளோட தாய். நீ எப்போவுமே என் கூட தான் இருக்கணும். भाई ये साहब कहीं खुद की माँ को तो नहीं मार डालेगा? मुझे ऐसा ही लग रहा है. सनी। ഇത് ഞാൻ എന്നെ എൻ്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു പണ്ട് हम्म, 1905. भाई साहब. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. तो हमारा अंदाजा मुझे- बिल्कुल सही था. അന്ന് ഇതുപോലൊരു നാച്ചിയപ്പ ബ്രിട്ടീഷ് ആർമിക്കാരൻ എൻ്റെ പുറകെ വന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്തു. എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ അവൻ മുന്നിൽ കയറി നിന്നു. എ- എ- മരിച്ചു. ഓ. എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അതിൻ്റെ കുറ്റബോധം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എനിക്ക്. इसलिए वो जब उसे देखती है तो उसे देखती रहती है कि क्योंकि वो उसकी तरह Exactly. दिखता है। हम्म, ചന്ദ്ര शायद एक कनेक्शन भी है दोनों में. നമ്മൾ വിചാരിച്ചാലും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് സിറ്റുവേഷൻ. ചന്ദ്ര കൊന്നതിലൊരുത്തൻ ഒരു സുന്ദർ. അവൻ ഗജേന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗാങ്സ്റ്റർ ടേൺഡ് പൊളിറ്റീഷ്യൻ്റെ അനിയനാണ്. വെരി പവർഫുൾ, വെരി ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ മാൻ. തന്നെ കൊന്ന അയാൾ അടങ്ങുന്നുള്ള മട്ടിലാണ്. ഇറ്റ്സ് പേഴ്സണൽ ഫൈൻ. അയാൾ ഹോം മിനിസ്റ്ററായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഒരു ഗരുഡ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻറ്റി ടെററിസ്റ്റ് സ്ക്വാഡ് ഇറക്കാനുള്ള പ്ലാനാണ്. ओह ടോമാർക്കും റിസ്ക് ഉണ്ട്. പ്രകാശ് വരും, ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കാം. तो वो जो और मार दिया, इसने खुद की माँ को भी मार दिया। भाई साहब.
वो उसकी आंखें देखी तुमने? तो दोस्तों, जैसे ही सनी को गोली लगने के बाद वो पुराने हॉस्पिटल में जब उसको लेके जाते हैं, उसके बाद मूवी ने बहुत सारे ट्विस्ट लिए हैं। जैसे कि जो वो इंस्पेक्टर होता है नचियप्पा, उसमें उसको जब बाइट किया था फर्स्ट टाइम चंद्रा ने, तो दोस्तों उसमें जो चेंजेस शुरू हो गए, उससे लग रहा है दोस्तों कि वो कहीं ना कहीं वैम्पायर में कन्वर्ट होने वाला है। और जैसे कि हम सब जानते ही है कि पावर जो होती है वो अच्छे इंसान को अच्छा बनाती है और बुरे इंसान को बुरा। तो ठीक ऐसा ही है दोस्तों कि चंद्रा एक अच्छी पर्सन थी, इसलिए वो अच्छी बनी रही, और जो इंस्पेक्टर नचियप्पा थे वो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक राक्षस छुपाए हुए थे, तो वो एक राक्षस ही बनेंगे। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं नचियप्पा ने इन सबको, सनी, वेनु, नाइजिल और चंद्रा को ट्रैक कर लिया है कि वो Exactly. कहाँ पे है, और वो उनका पीछा करते वहाँ पर पहुँच गया था। बट कहीं ना कहीं हमारे टोविनो की एंट्री होती है वहाँ पे एज अ माइकल, और उनका जो मैजिशियन वाला जो Character भी दिखाया, exactly. कैरेक्टर दिखाया उनका, वो बहुत जबरदस्त था। जैसे वो दो इंस्पेक्टर जो भेजे होते हैं उसने नचियप्पा ने, तो उनको वो कैसे एक तरफ से हिप्नोटाइज कर देता है और उनको जादू करके जो उनको उलझाए रखता है उसके Exactly. जादू में, एक टाइप का इल्यूजन ही था वो। इल्यूजन क्रिएट करता है और उन सबको बचा लेते हैं। और फिर वो लेके जाते हैं उनके जो हमने सीक्रेट प्लेस। और इस सीक्रेट प्लेस की मुझे एक बात अच्छी लगी कि ऐसा लगता है दोस्तों कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हमें फर्स्ट टाइम जब नीली को वो फादर जब नाइफ मारता है उसके हार्ट पे, तब वही इंसान मे बी रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए जिसने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जिसमें मल्टीपल कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। मतलब जैसे चंद्रा जैसे, नीली जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो खुद कहा था उन्होंने कि तुम अकेली नहीं हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो उसी तरह के सारे लोग जिनके पास ये सुपर पावर्स है, कहीं ना कहीं हर एक के पास अलग अलग पावर्स हो अलग-अलग सकती है, power। क्योंकि चंद्रा के पास वो वैम्पायर थी, तो हमें टोविनो का कैरेक्टर अलग दिखाया है, अलग दिखाया। उनका मैजिशियन टाइप कुछ दिखाया है। एग्जैक्टली। तो हो सकता है ऐसे ही बहुत सारे कैरेक्टर्स हो, वेरिएंट्स कह सकते हैं हम हाँ, उनको, बिल्कुल। और वो सारे वेरिएंट्स को एक जगह पे लाके कुछ अच्छी काम के लिए, अच्छे मकसद से उन्हें एक जगह पे उन्होंने बिल्कुल। रखा हो। और इसमें बोला भी गया है कि वो गॉब्लिन का कुछ तो भी आगे जाकर दिखाने वाले हैं, तो हो सकता है दोस्तों कि बहुत बड़े और बुरे राक्षस एग्जिस्ट करते हो, इसलिए तो ये ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं बिलोंग करती है। और इसमें एक और कैरेक्टर दिखाए गए हैं जो कि पीछे से दिखाए गए हैं। 2 बार हमें, दिखाया है। हाँ बिल्कुल, तो हमें नहीं पता वो कैरेक्टर है कौन, लेकिन उसमें एक और कैरेक्टर थे जहाँ पे वो उस केज में वो थे कहते शायद। हैं ना कि तुम लोग यहाँ पे रुको, माइकल कहता है और मैं चार्ली के साथ रुकूंगा। Exactly. तो वो चार्ली का फेस अभी दिखाने का बाकी है, देखते हैं होता कौन है ये चार्ली। अभी तक तो लोका चैप्टर 1 जो हम ये वाला मूवी जो रिएक्ट कर रहे हैं, उसमें 3 कैरेक्टर हार्डली हार्ड हमें दिखाया है। हो सकता है दोस्तों कि इसके बहुत सारे पार्ट्स आए और उसमें हमें अलग अलग वेरिएंट्स, एग्जैक्टली अलग अलग वेरिएंट्स हमें दिखाई दे। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है, और इसका क्लाइमैक्स अभी भी बाकी है, तो क्लाइमैक्स में हमें बहुत सारे एक्शन शायद बहुत ह्यूज लेवल पे देखने को मिलेगी। तो ये था दोस्तों हमारे इस वीडियो का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों कि हमें और कौन सी मूवीज पे रिएक्ट करना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों लोका के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।